Assalamu alaikum. Can you all hear me? Yes, miss. Achha. Okay. So without wasting time, let's start with the part of biodiversity. Last time, just a little bit recap that we had finished the Simpson's index of diversity, whatever was left from that. And then we began with the concept of understanding what do you mean by a species. I think Dua and Mariam were there. And then after going through different definition of species like biological species, morphological species, I'm not going to repeat it. Then we moved on to the concept of hierarchical classification of different kinds of organisms on this earth. And we also try to understand what is the meaning of taxonomical rank and a taxon itself. And then we, with some examples, we tried to figure out what do we understand by the word domain and kingdom and phylum and class and so on. And I also gave you a mnemonic to remember it in a particular sequence, which was, if I just exclude domain from the top, the mnemonic to remember was King Philip comes out from Germany swimming. So what I told you from last time was that you are not supposed to remember the taxonomical classification of every organism, but you should know the sequence of this. What is the sequence of this? You should know that. And yes, you should also know this, that initially there were only like the taxonomical classification only used to start from kingdoms. But when a special kind of bacteria, which were known as archaebacteria, when they were discovered, we had to include another rank or another taxonomical rank in this classification, which was that of domains. So now we can say, agar hum iske piche jaye, to we can say that the topmost taxonomical rank in the hierarchical classification of organisms is the domain. How many domains do we have? We have 3 domains. And what are those? Let me zoom into it. The 3 domains are domain bacteria, domain archaea, and domain eukarya, right? Why did we have the need to divide prokaryotes into domains bacteria and domain archaea was that jisko hum prokaryote kehte hain, wo to usme it has all the typical characteristics of bacteria that you all have done in AS. But there are special bacterium, one of which we did in the chapter PCR, in which we were using Taq polymerase. So Taq polymerase was a special kind of bacterium which was capable of living in extremely hot environments like hot springs, which is why we were using that as a substitution of DNA polymerase in the PCR machine, right? Because वो heat tolerant bacteria tha, right? So that's why we were using, we were actually isolating this enzyme, which had a similar function as DNA polymerase from this bacterium, which was known as Thermophilus aquaticus. किसी को याद है ये? हाँ जी मरियम, आपको याद है? Yes, Miss, last class में किया था ना. हाँ, तो Thermophilus aquaticus जो है ना, it is also a bacterium, but it has some characteristics which are similar to prokaryotes, and it has some characteristics which are similar to eukaryotes. इसी वजह से ना हम इसको prokaryotes की domain में डाल सकते हैं, ना eukaryotes की. So what do we have to do? We have to now make 3 domains. Domain number 1 will be bacteria. Domain number 2 will be archaea. And domain number 3 will be eukarya. और फिर हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि we have included prokaryotes between the domains bacteria and archaea. मतलब कि बैक्टीरिया वाली डोमेन के अंदर भी बैक्टीरिया ही है, मतलब प्रोकैरियोट्स हैं, राइट? और उसके अंदर आर्की भी हैं, which we have separated them from the typical bacteria जो आप लोगों ने AS में किए हैं. Why? Because these bacteria can live in extremely hot environments.
And not only hot, और भी बहुत सारे extreme environments हैं, जैसे कि environments in which there is a very high concentration of salt, or environment in which there is no oxygen. तो ये सारे extreme environments हैं, तो इसमें ये bacteria रह सकते हैं, which is why we have now put them into a separate domain. राफी, ये बात समझ आ रही है Yes. या नहीं समझ आ रही? सही से बताओ राफी, मतलब आ रही है आ रही है ना? अच्छा, summary नजर आ रही है in the form of this of these three keywords. If I say bacteria, I will say the domain that contains all prokaryotic organisms except the archaea. Archaea are belonging to the domain of prokaryotic organisms that resemble bacteria, but they do share some features with eukaryotes as well. आज वो हम करेंगे. And eukarya, हम सबको पता है कि eukarya is that domain that contains all eukaryotic organisms, namely prototists, fungi, plants, animals, humans. ठीक है? Protoctus में we've only done one protoctus in AS, and that is plasmodium. Plasmodium जो कि malaria करता है. ठीक है? Let's do the classical features of each of these domains separately. फटाफट कर लेते हैं. सबसे पहले domain bacteria. ठीक है? अच्छा, now I will not repeat all the characteristics of domain bacteria right now because सबके सब हम कर चुके हैं AS में. आप मुझे जल्दी बता दो राफे, what comes into your mind when I ask you about the typical features of bacteria? जी राफे. मैं सोच रहा हूँ एक मिनट. मैं वो प्रोकैरियोटिक फीचर्स होते हैं ना, जो हमने रिमेम्बर करने कौन क्या होता है. लास्ट ईयर क्या किया था? लास्ट ईयर सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, डू दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस? मैं रिकॉल कर रहा हूँ, मैं भी बहुत टाइम हो गया तब से मैंने प्रोकैरियोट्स का कुछ भी पढ़ा है. रिकॉल करना पड़ेगा. आई एम सॉरी. अच्छा, कोई मसला नहीं है. मरियम, आप बता दो, डू दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस? Prokaryotes don't have a nucleus. They don't have a true nucleus. They have a circular loop of DNA. ठीक है? They don't have membrane-bound organelles. They only have ribosomes. Neither do they have mitochondria, nor a true nucleus, nor a chloroplast. They don't have chlorophyll. They don't have RER. They only have a cell membrane, which is made up of phospholipids, and the cell wall is made up of peptidoglycan. They have a cytoplasm. They have a circular loop of DNA. They are very tiny organisms. Okay? But of course, they're not tinier than the viruses. The viruses they have a very large size, very small size as compared to the bacteria. Okay? ये सारे features थे domain bacteria के, which we did in AS. Moving on to domain archaea, ये आपके लिए नया है. Archaeans are also prokaryotic. Why do we? अच्छा, when we remember this, guys, when I say कि domain bacteria and domain archaea both are prokaryotic, इसका मतलब ये है that both of them don't have a true nucleus. That's what is meant by that, right? Domain bacteria are prokaryotic, domain archaean are prokaryotic, which means they don't have a true nucleus. But there are differences between the two. And what are those differences? The first important difference is that domain archaea includes those bacteria which can live in extreme environments. That's why another name that is given to them is extremophils. ठीक है? अब मैं ये करूंगी क्योंकि हमें ये रिकॉर्डिंग दूसरों को भी बतानी होती है ताकि वो सुन सकें. So I'm not going to ask any questions from both of you. I'll be just talking and talking. If you want to stop me, let's say at a point where you haven't understood anything, तो मुझे please stop कर लेना, वरना मैं continue करती रहूंगी explanation, right? अच्छा. Now, classical features of bacteria. These were all the features that we all did in AS. No nucleus. DNA is circular. It's known as a naked DNA, which means ये बहुत clarity से पता होना चाहिए. Naked DNA means it does not have histone proteins associated with it. Small circular plasmids may be present. No membrane-bound organelles. ठीक है? The ribosomes, they are scattered, the free ribosomes, but they are 70S in size, smaller
than in the eukaryotic cells. Cell wall is always present. It is made up of peptidoglycans. Cells, since they don't have a true nucleus, so they will divide by binary fission, not by mitosis. And these cells can exist as single cells or as group of cells. ठीक है? ये हो गया characteristics of bacteria, जो कि राफी को नहीं याद आ रहे थे. And these are all the characteristics which we have done in AS. ठीक है? Moving on to classical features of archaeans, जो कि the common thing. Now, please listen to this part very carefully. The common feature between bacteria and between archaeans is that they are both prokaryotes, meaning they don't have a true nucleus. But there are some differences, and let's look at the differences between the two. दोनों ही आपको screen पे नजर आ रहे हैं, ठीक है? DNA of archaeans exists as a circular chromosome and does have histone proteins. तो ये एक आपको similarity मिल गई. Similarity भी मिल गई, difference भी मिल गया. क्या चीज? Both the DNA, both of them, they have a circular DNA, but bacteria do not have histone proteins, whereas archaeans have histone proteins. Acha. Bacteria have plasmids, archaeans also have plasmids. मिस सूफिया, जी, मिस बैक्टीरिया में डीएनए के पास हिस्टोन्स क्यों नहीं होते और यहाँ पर हिस्टोन्स क्यों होते हैं? हिस्टोन्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, कौन है ये? मरियम? मरियम अशरफ. हाँ, अच्छा. हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में आपको पता है या मुझे बताना पड़ेगा? एएस में किया है. मिस वो तो पता है, लेकिन क्या डिफरेंस मेक कर रहा है कि बैक्टीरिया में नहीं है लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है, वो क्या है? हाँ, वो डिफरेंस इस तरह मेक कर रहा है. देखो, एक्चुअली द मेन पर्पस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इज, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज योर सेल न्यूक्लियस बना रही है, दूसरा न्यूक्लियस बना रही है, राइट? नाउ दिस इज लीनियर डीएनए जो ह्यूमन डीएनए है, and then we have these histone proteins whose purpose is to, allow the DNA to coil in a regular fashion, isn't it? Entanglement नहीं होती DNA की, क्योंकि हमारा DNA बहुत long है. Now, since the DNA of bacteria is very very simple, मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो उसके पास सिर्फ ऐसे circular DNA है and there are no histone proteins. But the DNA of this special domain, which is domain archaea, is circular also and it has histone proteins also. इसका मतलब ये हुआ कि these histone proteins must have been given to such kind of a circular DNA to prevent entangling of it. Now, since we know that archaeans, the archaebacteria, have characteristics which are quite different. ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो इतनी सॉल्टी एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते. तो व्हाट डू यू थिंक, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना. तो अब ना, by virtue of having this different characteristics, of course the genome will also be different, and one of the differences is that the DNA of archaeans have histone proteins. थोड़ा सा genome complex होगा. समझ आ रही है बात? थोड़ी बहुत, लेकिन आ रही है. हाँ, लेकिन इसके थोड़ी बहुत ही आपको समझ आएगी, because we are not going into the genomic complexity या कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स है, ये हमें पता है. अब आप खुद सोचो, फिनोटिपिकली दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं. एक है टिपिकल बैक्टीरिया की तरह बिहेव कर रहा है, और एक जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकता है. द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अराउंड 80 to 100 डिग्री सेल्सियस. लैको वाटर में भी रह सकता है, सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी रह सकता है. तो द रीजन व्हाई these bacteria are having features different from the typical one will be attributed to their genetic makeup, isn't it? So their genetic makeup is different. इसी वजह से क्या कहा गया था, अब हम इसके पीछे चलते हैं, आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा कि जब हम डोमेन्स की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि in the 1970s prokaryotes were discovered living in extreme environments, right, exceeding 100 degrees Celsius. Studies revealed that the genes coding for the RNA, ठीक है, किसकी जीन्स की बात हो रही है? आर्कीबैक्टीरिया की जीन्स की बात हो रही है. Studies revealed that the genes coding for the RNA that makes up their ribosomes were more like those of eukaryotes. ठीक है, यानी कि है ये बैक्टीरियम लेकिन उसकी जीन्स सिमिलर हैं टू यूकैरियोट्स. अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जीन्स यूकैरियोट से सिमिलर होंगी तो फिर उसमें यूकैरियोट की कुछ फीचर्स आएंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. ठीक है, the extremophils were found to share features with both typical bacteria and eukaryotes. अब समझ आ रही है बात?
जी मिस समझ आ गई। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना जाएंगे कि हमें इतना अंदाजा हो कि यस, सिंस द phenotypic features, since the way these archaeans are behaving in extreme environments is different from how the typical bacteria behave, so of course these features have to be attributed to some difference in their genetic makeup, and this is the difference in the genetic makeup. सबसे पहला डिफरेंस क्या नजर आया कि भाई इसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या नजर आया कि नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द राइबोसोम्स ऑल्दो दे आर 70s, बिल्कुल उसी की तरह प्रोकैरियोट्स की तरह, but the ribosomes are smaller than in the eukaryotic cells, but the small subunit has a feature that is similar to the eukaryotic ribosomes but not to the bacterial ribosomes. कैसे? The base sequence of the rRNA, जो ribosomal RNA है ना, and the primary structure of the ribosomal proteins are more like those in the eukaryotes than the bacteria. ये बात समझ आ रही है? Yes. अब बात वही आएगी कि कोई स्टूडेंट जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होगा कि भी किस तरह से डिफरेंट है। कोई जरूरत नहीं है इसकी डिटेल में जाने की, इतना बस रखना है, याद रखनी है बात कि दोनों के पास बैक्टीरिया also has 70s ribosomes, archaeans also have 70s ribosomes, but जब हम किसी राइबोसोम को डिस्क्राइब करते हैं ना, हम कहते हैं a small subunit and a large subunit, तो इसका जो small subunit है ना, it has a structural similarity more to the eukaryotic ribosomes as compared to bacterial ribosomes. कैसे? कि उसका जो base sequence है ना, जाहिर है वो RNA है तो उसका एक base sequence होगा, nucleotide sequence, and also the primary structure of the ribosomal proteins, they are more similar to eukaryotes as compared to bacteria. अच्छा, membrane lipids भी बड़ी unique हैं. They are not found in membranes of bacteria or eukarya. Normally तो चाहे eukaryote हो या चाहे prokaryote हो, the membranes are made up of phospholipids, but here the membrane lipids are a bit different. कैसे different हैं? Structurally, what is their composition? It's not, under discussion. We will not go into the details of this, right? Cell walls are present, but they do not contain peptidoglycan. देखो कितना फर्क आ रहा है. Cell wall है, लेकिन peptidoglycan से नहीं बना है. किस चीज से बना है? Again, we are not going to go into the details of this because already जो biodiversity का chapter है ना, वो पहले से ही बहुत ज्यादा इसमें डिटेल है, तो और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, archaeans के पास भी they don't have a true nucleus, and they will divide by binary fission, not by mitosis. Just like bacteria, the typical ones, they can also exist as single cells or small groups of cells. So what do we get from this discussion is that in your exams, in CIEs, you will be given such kind of structured questions या comparison questions जिसमें आपको कहा जाएगा या तो you make a comparison between these two, or you write down the similarities or only the differences. So you read the question properly and then only you'll be able to answer कि आपसे क्या पूछा गया है. Any questions? वरना मैं आगे जाऊं. जी, मरियम अशरफ. नहीं मिस, कोई क्वेश्चन नहीं. कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं इस पे. अब तो मेरे ख्याल से I think I don't even need to tell you about the features of eukaryotes. हम सबको ये सब कुछ पता है, ठीक है. True nucleus, membrane bound organelles, linear DNA with histone proteins, 80s भी हैं, 70s भी हैं. अगर आपसे पूछा जाएगा 80s कहाँ है तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म में है, ठीक है. 70s will be in the chloroplast and the mitochondria. क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो सर्कुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोट्स के पास लीनियर डीएनए भी है और सर्कुलर डीएनए भी है. आपसे कोई पूछे तो आप स्पेसिफिकली बताओगे कि द सर्कुलर डीएनए व्हिच इज फाउंड इन द यूकैरियोट्स इज रिजाइडिंग विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट. एंड यूकैरियोट्स की तो बहुत बड़ी डाइवर्स वो है क्लासिफिकेशन है कि दे रेंज फ्रॉम द टाइनीएस्ट यूकैरियोट जो कि एक अमीबा है, वन सेल, ठीक है, टू अ कॉम्प्लेक्स multicellular human being, ठीक है. So all sorts of organisms from uni to multicellular. Of course, since we all share this property कि हमारे पास two nucleus है, so our cells divide by mitosis. Cell walls किसी eukaryote में है, सब में नहीं है.
फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में सेल वॉल है, फंगाई में सेल वॉल है, बट एनिमल्स डोंट कंटेन सेल वॉल, ह्यूमंस डोंट कंटेन सेल वॉल. ठीक है. Yes, eukaryotes can reproduce sexually as well as asexually. जैसे कि plants में asexual reproduction होगी, vegetative propagation होगी, animals में उसमें flowers में, flowering plants में, या फिर जो है human beings में sexual reproduction होगी. In which, अच्छा मरियम अशरफ आप मुझे बताओ sexual reproduction को आप कैसे define करोगे? What do you understand by sexual reproduction? Yes, Mariam. Miss, sexual reproduction is when two haploid Two haploid. Miss, when two haploid zygote fuse together to form a diploid. And two haploid gametes fuse to form a diploid zygote. यही आप कहना चाह रही है ना? Correct. Whenever you have to define sexual reproduction, you will say it involves the fusion of haploid gametes. ठीक है? जहाँ पे भी gametes involved होंगे, जहाँ पे two different parents होंगे, it is sexual reproduction. ठीक है? अच्छा. So up till now, I can just very quickly summarize in one line that we have just now finished the topmost rank, hierarchical rank in the taxonomical category, which is the domain. हमने तीनों domains कर ली. क्या-क्या किया? We did domain bacteria, we did domain archaea, and we did domain eukarya. And now from domain we are moving to kingdom. यहाँ पे आपको दिखाती हूँ हम लोग ने कहाँ थे हम? We were here. We finished the 3 domains. ठीक है? And now we are moving on to kingdom. ठीक है? अच्छा. अब देखते हैं kingdom कैसे explain किया हुआ है आपकी book में. How many kingdoms will you do? The 3 domains are divided into kingdoms. Each of them, right, are divided into kingdoms. This section describes the features of the 4 kingdoms of the domain eukarya. So the good thing about the A-level syllabus, अच्छी बात ये है A-level syllabus की कि वो हर domain के kingdoms हम पे फर्ज नहीं करते कि हम पढ़ें. हालांकि I think इंटर के syllabus में कुछ इस तरह है. So for A-level we only need to study the 4 kingdoms of domain eukarya only. Domain bacteria के कौन से kingdoms हैं, domain archaea के कौन से kingdoms हैं, वो हमारे A level के syllabus में नहीं है. We'll only do these 4 kingdoms. Which one of those? Protoctista, kingdom fungi, kingdom plantae, and kingdom animalia. और मेरे ख्याल से सिवाय प्रोटोक्टिस्टा के हम सबको फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना वो सब पता है. ठीक है? अच्छा, लेट्स डू अबाउट प्रोटोक्टिस्ट. एक चीज याद रखना, any animal which does not have features which are 100% similar to fungi or 100% similar to plants or 100% similar to animals will be included in the kingdom Protoctista. यानी कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन है लेकिन सेल वॉल नहीं है. इनके पास किसी में क्लोरोप्लास्ट है, किसी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है. ठीक है? किसी में एनिमल्स की तरह का वैक्यूल है, किसी में एनिमल्स की तरह का वैक्यूल नहीं है. ट्रू न्यूक्लियस भी है, राइट? ट्रू न्यूक्लियस है, इसी वजह से ये सारे के सारे जो है ना वो यूकैरिया में फॉल करते हैं. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन. जो आपका जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है ना, it's a combination of features, some of the features from kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia. अब देखते हैं ये वाले इसके फीचर्स हैं. ठीक है? यूकैरियोटिक तो ऑफ कोर्स है ही हैं. They can be in the form of a single cell or a group of cells. ठीक है? जैसे मैंने क्या कहा, some have animal-like cells, जिनके पास कोई सेल वॉल ही नहीं है, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं. और सबसे जो कॉमन एग्जांपल है ना प्रोटोजोआ की, आप सबको पता होगा, and that is the amoeba. Amoeba, which is a unicellular organism that lives in ponds, is an example of a protoctist, which is a one-celled organism and it doesn't have a cell wall. कुछ ऐसे होते हैं आपके प्रोटोक्टिस्ट जिनके पास प्लांट लाइक सेल्स भी होते हैं, सेलुलोज सेल वॉल्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, एंड दे आर नोन एज एल्गी. काफी सारे लोग जो है ना वो एल्गी को समझते हैं कि दे आर प्लांट्स, बट प्लीज नोट दिस डाउन. अच्छी तरह से याद रख लो कि एल्गी आर नॉट प्लांट्स. एल्गी बिलोंग टू दिस किंगडम प्रोटोक्टिस्ट. ठीक है?
because neither they do have complete features of plants nor they do have complete features of animals or fungi. So which is why we have included Miss, हम algae इसमें in the हाँ बोलो इसमें हम मलेरिया कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे इसमें एग्जांपल मेंशन नहीं की हुई है another example is malaria यानी plasmodium. Plasmodium is also a protoctist. ठीक है अगर आपको ना अपने एग्जाम के लिए 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद करनी है ना प्रोटोक्टिस्ट के लिए तो यू शुड रिमेंबर लाइक दिस एग्जांपल नंबर 1 अमीबा ठीक है एंड अमीबा का दूसरा नाम प्रोटोजोआ भी है एग्जांपल नंबर 2 इज प्लाज्मोडियम एंड एनी स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम falciparum या प्लाज्मोडियम vivax जो भी आपको करना है लेकिन बेसिकली प्लाज्मोडियम और जो थर्ड एग्जांपल है वो है एल्गी right. So all these belong to the kingdom Protoctista. One thing which is common between the organisms of this kingdom and between the organisms of the other kingdoms is that they are all eukarya. Eukarya मतलब सबके पास 2 nucleus है, ठीक है? सबको समझ आ रही है ये बात? Can I move forward? Yes, miss. अच्छा अब हम किंगडम फंगाई पे आ रहे हैं आपने ओ लेवल्स में यू हैड डन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंगस हालांकि बहुत अरसा हो गया है लेकिन आपको इस तरह का डायग्राम दिखाया गया था आई थिंक आई विल फर्स्ट आस्क यू गाइस ऐसे डायग्राम था ना ये माइसीलियम वाला याद है ये माइसीलियम ग्रो हो रहा है ब्रेड मोल्ड ग्रो हो रहा है जैसे अगर कोई स्टेल पीस ऑफ ब्रेड है एंड आई टेक अ टाइनी यू नो part of a fungus, it will look like this. And if I zoom into one of these hyphae of the fungus, they will look like this under a microscope. किसी को याद आ रहा है ये डायग्राम ऐसे आपके O level की बुक में था? Yes or no? हाँ जी मरियम. अच्छा कोई बताएगा फटाफट इतनी खामोशी है कि what are the कोई main characteristics of fungi? Do they have a cell wall? Yes. And the cell wall is made up of what? Cellulose. Chitin. And they have a cell membrane which is made up of phospholipids. ठीक है? Do they have a true nucleus? Yes or no? Yes. They have a true nucleus which has a linear DNA. Yes. Do fungi have chloroplasts? They do not have chloroplasts. This is what differentiates them from plants. They do not have chloroplasts. So this means if they don't have chloroplasts, it means they can't photosynthesize. They have ribosomes also, and sometimes they have other organelles also, but this is basically their general outline. ठीक है जैसे fungi की होती है. And let's look at the features that have been mentioned in your book. सबसे पहले हम इसका keyword देखते हैं. It's a kingdom. Fungi is a kingdom of eukaryotic organisms which do not photosynthesize, and they have cell walls without cellulose, or in other words, you can say they have cell walls made up of chitin. And these are the features. ये most of the features you already know. ये chapter आसान है. ये वाला part chapter का आसान है कि they are all eukaryotic. They do not have chlorophyll. They can't photosynthesize. Yes, heterotrophic nutrition. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. When I was teaching you cellular respiration and photosynthesis, I'll repeat once again. Organisms which use organic compounds made by other organisms as their source of energy are known as heterotrophs. So we humans are also heterotrophs and fungi are also heterotrophs. मतलब कि अगर हमारी बॉडी में हमें कोई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे दे, our body does not have the capability to join these three with each other and make a molecule of glucose, which is why we need ready-made organic compounds which will be made by other organisms. Other से मेरी मुराद है कि they will be made of course by producers which are plants. Okay, so we are dependent
on plants to get the organic substances like carbohydrates as a source of energy. So all those organisms which are dependent on plants to obtain their organic compounds as a source of energy are known as heterotrophs. In other words, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि what mode of nutrition do fungi have, so you will say that they have heterotrophic nutrition. ठीक है, और ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. प्लांट्स जो होते हैं आपके, जो प्लांट्स होते हैं वो हेटरोट्रोफ्स नहीं होते, वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं. ऑटोट्रोफ्स, ट्रोफ लिटरली मींस फूड and auto means खुद ही बनाते हैं, automatically they made food themselves. Heterotroph is that we are dependent on an organic source of carbon so that we can break it down, break the CH bonds in the carbon and retrieve energy from that. Achha, how do fungi reproduce? They reproduce by means of spores. They can be a unicellular fungus like yeast. आपने yeast किया है exam में, उसमें O levels में. So fungi can range from a simple body form which may be unicellular, or they can be made up of long threads. जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी bread mold की, which is hyphae. All the hyphae that grow from a single spore form the mycelium, the body of the fungus. बड़े बड़े fungi भी हो सकते हैं, like mushrooms जो हम खाते भी हैं, edible mushrooms, right? They produce large compacted masses of hyphae known as fruiting bodies. An important feature of fungi, we already know that their cell walls are made up of chitin and they never have cilia. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई important बात कौन सी याद रखनी है, so I will remember this. They do not have chlorophyll. They have heterotrophic nutrition. They do not have cilia, and they reproduce by means of spores. Any questions? This is the diagram that you did in O levels. आपको ये भी दिखाया गया था, ठीक है? And then one hypha, the network of the hypha is known as a mycelium. ये इस तरह से colonies में grow होता है ये fungus. और एक hypha को अगर हम उठाते हैं, like this, and if you do a cross section of this hypha, we will be able to see these details जो मैंने diagram बनाने की कोशिश की थी. हाँ, one feature which I forgot to tell you was that one of the striking feature of a fungal cell is the presence of a large vacuole also, which you can see in the middle. Cell membrane, cell wall made up of chitin, a true nucleus with linear DNA, a large vacuole, lots of ribosomes, and also membrane-bound organelles including mitochondria. Okay, so this is the detail of a fungus. I am actually going very quickly ताकि ये सारे kingdoms आज खत्म हो जाएं क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास समझने की बात नहीं है. अच्छा, अब मरियम शिराजी आपको आवाज आ रही है? मरियम शिराजी. Yes. आप मुझे फटाफट बताओ. Yes, At least if I ask you five important features of organisms belonging to kingdom Plantae. बताओ 5 features. आपको पता है क्लास 6 से आप मेरे ख्याल से प्लांट्स के बारे में पढ़े. Chloroplast. Okay, so you Chloroplast. want to say plants have chloroplasts. Okay, they have chloroplasts. And any other feature? Cell wall. Cell wall made up of cellulose, correct? And Vacuole. large permanent vacuole. Clearly लिखना पड़ेगा आपको. Large permanent vacuole. और कोई फीचर जो प्लांट्स के लिए खास हो? Granula. Can be grana. Sorry, I meant. grana. अच्छा, are plants multicellular or unicellular? Multicellular. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लगता है ऐसे है कि ये बड़ा आसान सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना, राइट डाउन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी या किंगडम एनिमेलिया, तो फिर लगता है ऐसे है कि बहुत इजी होगा, लेकिन स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ठीक है, अब हम देखते हैं. लेट्स लुक एट दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स. क्लियरली लिखना है आपको. क्या लिखना है क्लियरली? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स. मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स.
ठीक, few types of specialized cell होंगे. कोई मुझे एग्जांपल देगा किसी भी स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल की? फटाफट बताओ. You've done so many specialized plant cells. Parenchyma, mesophyll, Parenchyma, root hair cell, mesophyll cells, very good. Palisade mesophyll cells, fungi mesophyll cells, guard cells, epidermal cells, ये सब specialized cells हैं, ठीक है? Xylem, phloem, ये सब specialized हैं. अच्छा, some cells have chloroplast and they can photosynthesize. Very, very important. All plants follow autotrophic nutrition, meaning that they make their own foods. They have the capability to join these elements together with the help of chloroplast and sunlight and make a molecule of glucose by the process of photosynthesis, जो हम नहीं कर सकते, fungi भी नहीं कर सकते, which is why we are heterotrophs and plants are autotrophs. तो इसमें clarity होनी चाहिए सबको. जब भी आप वैक्यूल की बात करोगे, जैसे मरियम ने कहा, you will always use these two words. मैं बार-बार इस पे स्ट्रेस कर रही हूँ ताकि आप लोग एग्जाम्स में मिस्टेक्स ना करो. Large permanent vacuoles for support, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? Cell walls सिर्फ नहीं लिखोगे, cell walls are always present. The key word is always, and they are made up of cellulose. हाँ, किसी सेल में flagella हो सकता है, and example is the male gametes in ferns. कैसे होता है? How do ferns look like? That's not our problem. We won't go into the details of this, right? So this was about kingdom Plantae, and then we move on to kingdom Animalia, जिसमें सारे animals भी आते हैं and humans भी आते हैं. Multicellular eukaryotes, हम सब multicellular हैं with different types of specialized cells. The good thing about eukaryotes is that we have tissues and organs and systems. ठीक है? We do not have, like the animals do not have chloroplast, so they cannot photosynthesize. Cell vacuoles हमारे पास हैं, but plants में क्या आते हैं? Large and permanent, and we have small and temporary. And then you can also mention कि हमारे जो small और temporary vacuoles हैं, उसकी example lysosomes हैं and food vacuoles हैं. Be very, very clear when describing these features. Animals have heterotrophic nutrition. Animals do not have cell walls. सबसे important चीज जो animal और plants में difference है ना, वो ये है कि हमारे पास एक well developed central nervous system है, peripheral nervous system है, and chemical signaling mechanisms है, लेकिन plants में नहीं है, right? Some of the animal cells may have cilia. कोई ऐसे human cell बताओ मुझे मरियम which has cilia. A human cell which has cilia. चलो भाई फटाफट, इतनी देर लगा रहे हैं सब. मरियम अशरफ. ट्रैकिया में जो cells होते हैं. The cells, the entire lining of your respiratory system is pseudo-stratified columnar ciliated epithelium. Fallopian tubes have cilia, right? Similarly, एक animal cell की example, human cell की which has flagellum is the sperm. So animal cells में ये features हो सकते हैं, लेकिन किसी में, सब में नहीं होंगे, right? So a kingdom of eukaryotic organisms which are multicellular, heterotrophic and have a nervous system. ये जो आपके keywords दिए हुए हैं ना, आप सबके पास इस टेक्स्ट बुक का पासवर्ड है. मिस फायजा ने सबको दिया है. इसके पासवर्ड को यूज करो. यूज करने के बाद जो है आगे टेक्स्ट बुक आपके सामने खुल जाएगी, और उसमें जो ये कीवर्ड्स के डब्बे दिए हुए हैं ना, they are really very important. उससे फायदा ये होता है कि when you look at a keyword, it will give you the typical feature of that particular kingdom, जो कि उसके लिए खास है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूंगी ना कि किंगडम एनिमेलिया के बारे में मैं कहूँ कि किंगडम एनिमेलिया is a kingdom in which all organisms are eukaryotes, तो ये incomplete definition होगी. यूकैरियोट तो किंगडम जो है वो प्लांटी भी है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी है, किंगडम फंगाई भी है. But if you will complete the definition in saying that Animalia is a kingdom which contains eukaryotic organisms, they are multicellular, heterotrophic and a nervous system, तो फौरन आपका ख्याल आएगा कि ये Animalia ही हो सकता है, क्योंकि फंगस के पास nervous system नहीं है. फंगस के पास ये है, it has this, but it doesn't have a nervous system. So if any kingdom contains these 4 features, it has to be kingdom Animalia. ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं? Yes, miss.
जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटी को देखो, a kingdom of eukaryotic organisms which are multicellular, cell walls are made up of cellulose, they can photosynthesize. फौरन से ख्याल आएगा kingdom plantae. ठीक है, अच्छा, now I think we finished these 4 kingdoms. अब थोड़ा सा viruses रह गया, and viruses also you've done them in AS, but we'll very quickly revise the viruses. We all know they are acellular, they are not even considered as true cells. मिस तो सोफिया, ये किसी भी, जी बेटा, मिस ये इतने बेसिक पे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बड़े बेसिक लग रहे हैं, लग रहा है बहुत ही आसान है, लेकिन इसी तरह के ही सवाल आएंगे कि what are the classical features of this kingdom, what is the difference between kingdom plantae and kingdom animalia, what is the difference between domain archaea and domain bacteria, इस तरह से आते हैं। आपको पता है मरियम, मैं आपको बात बताऊं, ये इतने इजी सवाल होते हैं कि इसमें आपको बहुत आराम से अगर फॉर एग्जांपल इसका एक ऐसे क्वेश्चन आता है, जरूर करना इसका ऐसे क्वेश्चन। वैसे तो चॉइस खत्म हो गई है, but usually if you get a question or an essay question on this topic, the chances are that you will get full marks. ठीक है, सो अच्छी बात है ना, आसान है। ठीक है, वायरसेस रह गया है, वायरसेस आर acellular, ठीक है, they are not even considered as living because they can't, इसको हम living इसलिए नहीं कहते हैं, अब आपसे एग्जाम में सवाल होगा कि they can't live on their own, they cannot respire, they cannot reproduce, they cannot excrete, they cannot move from one place to another, hence they are known as acellular. The only way that they can live is by taking support from the host cell. They attach to the surface of the host cell by means of the envelope या spike proteins, जैसे COVID-19 के spike proteins हैं. Then they take up the protein machinery, जो कि nucleus है, nucleus का DNA, and then they make copies of themselves, and this is how they destroy the cells. All viruses are entirely purely pathogenic, meaning कि सब के सब disease cause करते हैं. ठीक है? Viruses, अब ये सवाल आ सकता है, why are viruses not included in the 3-domain classification system? Because reason यहाँ पे दी हुई है, because viruses have none of the, sorry, ये मैं इसको highlight कर रही हूँ, viruses are not in the 3-domain classification system. This is because viruses have none of the features traditionally used for classification. When viruses are free in the environment, they are infectious, but they have no metabolism, वो respire नहीं कर सकते, ठीक है? When they infect cells, they make use of the biochemical machinery of the host cell to copy themselves, to copy the viral nucleic acids to make viral proteins. This often leads to destruction of host cells, जैसे कि COVID-19 करता था destruction of lung cells के through. अच्छा, the energy for these processes is provided by the respiration in the host cell. इसका मतलब वायरसेस के पास अपना एनर्जी प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, इसी वजह से we do not include viruses in the 3-domain classification. अब ये देखने में बहुत आसान लगता है, but students sometimes they are not able to write it in the correct way. इस तरह से आपको अपना जवाब लिखना है, ठीक है? अब viruses का अपना अलग taxonomical system है. The taxonomic system for classifying viruses is based on the type of nucleic acid they contain. Either viruses can contain DNA or they can contain RNA, but they can't contain both of them. ठीक है? तो हम viruses को कैसे divide कर सकते हैं? अच्छा, 2 classes में divide कर लिया. These are the RNA viruses, those are the DNA viruses. Why? Because इनके पास जो nucleic acid core है वो RNA है और उनके पास जो nucleic acid core है वो DNA है. एक और भी तरीका है क्लासिफाई करने का, whether the nucleic acid is single stranded or double stranded. In cellular organisms, DNA is double stranded and RNA is single stranded, but in viruses, both DNA and RNA can be single and double stranded. इसका मतलब, I don't know आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, देखो, जब भी हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना, ह्यूमंस की या इवन बैक्टीरिया की, तो we always say कि DNA हमेशा double stranded होता है and RNA is single stranded. लेकिन वायरसेस में उल्टा भी हो सकता है. वायरसेस में RNA can be double stranded and DNA can be single stranded and vice versa भी हो सकता है. So the table in front of you very clearly shows you that viruses have been divided on the basis of 2 categories. जो एक कैटेगरी है वो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आ रही है कि हमने वायरसेस को या तो DNA वायरसेस में डिवाइड किया हुआ है या RNA वायरसेस में. फिर DNA के अंदर हमने एक
और क्लासिफिकेशन बना दी. कौन सी viruses? Those DNA viruses which have a single stranded DNA, those DNA viruses which have a double stranded DNA. ठीक है. फिर RNA viruses में भी दो सब क्लासिफिकेशन है. All those RNA viruses which have a single stranded RNA and all those RNA viruses which have a double stranded RNA. समझ आ रही है बात या नहीं? And you are not supposed to remember the names of these different viruses. आपसे कोई expect नहीं कर रहा कि आप इसके नाम याद करो. What is expected from you as far as viruses are concerned is कि आपको पता होना चाहिए कि what is the basis of classification of the viruses. I've just told you there are two bases. We can either classify them on the basis of whether they are DNA or RNA. और फिर उसी basis के अंदर further हम classify कर सकते हैं कि whether the DNA or the RNA is single or double stranded. Besides that, you need to know the general characteristics of viruses, which are that every virus, whether it's a DNA or जो भी है, उसका एक typical जो feature ये है कि it has a nucleic acid core surrounded by capsid proteins. ठीक है? Capsid proteins के अलावा कुछ viruses के पास extra एक envelope होता है glycoprotein और उसके ऊपर spike proteins भी हो सकते हैं, but that's not a typical feature. Typical feature ये है कि उसके पास अपना एक nucleic acid core हो and the core is surrounded by the capsid proteins. They are all pathogenic, they are all disease causing, they harm the human beings. अब ये questions देख लो, इस तरह के questions आते हैं exam में. Explain why viruses are not included in the 3-domain classification system. State the features that are used in the classification of viruses. Should viruses be considered as living organisms or not? Yes, any questions? No, miss. So I think मिस आज वो के जो लिए आपने सी पार्ट हाँ। पढ़ा उसका आंसर को इलैबोरेट कैसे करेंगे? शुड वायरसेस मैं बी बताती कंसिडर्ड हूँ. एज हाँ, उसको आप ऐसे करेंगे कि viruses cannot be considered as living, and the reason is that they cannot respire or live on their own without the help of a host cell, right? In order to live, they need to attach to the host cell, take up the host cell machinery, the protein machinery, and then make copies. And in order to make copies, the energy that it also gets is from the respiration of the host cell, not its own respiration. अगर आपको याद रखना है ना कि viruses क्यों acellular हैं, तो you can remember these features. मैं आपको बताती हूँ कि, for example, viruses are acellular. इस पे मैं आज का लेसन खत्म करती हूँ. Because number one, they can't respire on their own. They have no protoplasm. चाहो तो ये लिख लो क्योंकि I think ये एग्जाम में एक दफा आया था. Protoplasm means living essence, life, nothing living. They have no cell membrane. मिस नथिंग लिविंग का क्या मतलब? मैं लिखती जा रही हूँ, आपके सवाल का जवाब आ रहा है. अब समझ आई बात? एक कोई स्ट्रक्चर है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है. हाउ इज इट गोइंग टू लिव ऑन इट्स ओन, राइट? न्यूक्लियस नहीं है तो अपनी कॉपी नहीं बना सकता. साइटोप्लाज्म और आपकी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाई वायरसेस आर एसेल्युलर. फर्दर अगर और डिस्क्राइब करना है इसको तो फिर आप लिखोगे कि in order for them to cause disease, they need to attach to the host cell. होस्ट सेल पे ये अटैच करेंगे, पहले ये करेंगे,
Second क्या करेंगे? They take up or take over the protein machinery of the host cell. Protein machinery का मतलब nucleus. Protein machinery है ही nucleus. So they take over the protein machinery of the host cell and make copies of their nucleic acids. And they obtain energy from the respiration of the host cell. अब समझ में आ रही है बात मरियम? Yes, miss. चाहो तो सॉरी, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. I'll just wait. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Taken? Yes. And then you can also take the screenshot of this. Okay? It's good that you asked this question, Mariam, because this question pe many students have some, I can say not such a clear concept as far as explanation about the fact that why a virus is acellular. Different तरह से आपसे पूछा जा सकता है, why a virus is not included in the domain hierarchical system? Why are they acellular? ठीक है? अच्छा. With that, I will finish my class and see you on Monday, inshallah. And please don't be absent this week, this coming week, क्योंकि इसमें मैं I'll try to finish the syllabus. ठीक है? तो अच्छा है कि आप इस week में absent ना हो. ठीक है? अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, miss. Love is miss. हाफिज. Officers.